नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। काफिले में शामिल वाहनों की संख्या में भारी कमी। लोगों से ईंधन की खपत कम करने की अपील। कई राज्यों ने भी पीएम की पहल पर उठाए कदम। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी आधे से भी कम किया अपना काफिला। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले में घटाई वाहनों की संख्या। जनता से ईंधन बचाने की अपील। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 4 बड़े फैसलों को दी मंजूरी। खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला। खरीफ में धान सहित प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। एमएसपी पर 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। कैबिनेट ने अहमदाबाद से धुलेरा के बीच सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन को दी मंजूरी। साथ ही नागपुर एयरपोर्ट को किया जाएगा अपग्रेड। एलएनजी पर निर्भरता कम करने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की कोल गैसिफिकेशन योजना को भी हरी झंडी। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। 85.20% छात्र हुए पास। लड़कों के मुकाबले फिर से लड़कियों ने मारी बाजी। 88.86% छात्राएं हुई पास। 82.13% कुल छात्र पास। ये थी हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट द्वारा लिए गए आज के बड़े फैसलों की। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 4 अहम फैसलों का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों से विकास को और रफ्तार मिलेगी। इन फैसलों में खरीफ फसल की एमएसपी में बढ़ोतरी, कोल गैसिफिकेशन सहित कई अहम फैसले शामिल हैं। पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया। 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। तो अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। और कैबिनेट ने खरीफ की फसल में धान सहित प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का ऐलान किया। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई। कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। खरीफ की फसलों पर एमएसपी पर 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14,000 से 2,26,000 वाला एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 के दौरान दिया गया है। साथ ही सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भी अहम कदम उठाया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे पास 400 सालों के लिए कोयले का भंडार मौजूद है।
इसीलिए हमें इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए देश में ही तैयार की गई स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे 50,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। और इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में अहमदाबाद से धुलेरा के बीच सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि धुलेरा भविष्य में बहुत बड़ा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। धुलेरा को एयरपोर्ट, सड़क और रेल से भी जोड़ा जाएगा। सबसे खास बात यह भी है कि यूरोप जाने के लिए धुलेरा एयरपोर्ट से फ्लाइट अरेबियन सी होकर सीधी जा सकती है, यानी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं होगी। अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धुलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीजें, बड़ौदा यहाँ पर है। धुलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीधी एक अगर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड लाइन, रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। और कैबिनेट की बैठक में नागपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने का भी फैसला हुआ। इसे पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिस पर कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एयरपोर्ट अपग्रेड और मॉडर्नाइज करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना, उसका और अपग्रेडेशन करना, इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का, वो सब काफ़ी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशंस हैं, जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीज़ें। और अब अगली खबर। पश्चिम एशिया में जारी संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार अब ईंधन बचत और खर्चों में कटौती को लेकर गंभीर कदम उठाती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री ने खुद भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की रणनीति अपनाते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने आधिकारिक काफिले का आकार कम कर दिया है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री के हालिया गुजरात और असम दौरों के दौरान उनके काफिले में शामिल वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की गई है। पीएम मोदी की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने के फैसले लिए हैं,
जिनमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में 50% तक कटौती के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा और सरकारी बैठकों में वर्क फ्रॉम होम तथा वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में 13 की जगह पर केवल 8 वाहन ही शामिल होंगे। तो वहीं राजस्थान सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन बचत को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने के साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि वे न्यूनतम वाहनों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक ईंधन खपत से बचें। इधर दिल्ली सरकार ने भी सरकारी कामकाज में वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वाहनों के काफिले में कटौती कर दी है। अपने काफिले में वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दिया है। आज अमित शाह के काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां ही नजर आईं। पीएम की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर अमल करते हुए यह फैसला लिया गया है। तो पश्चिम एशिया में जो संकट जारी है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो पीएम मोदी की देशवासियों से ईंधन खर्च को लेकर संयम बरतने और बचत करने की अपील एक जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या में कटौती करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि यह समय व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने का है। एशिया में जो वार की स्थिति है और उससे पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा देश भारत भी प्रभावित है। और माननीय हमारे देश के सूर्य प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने मार्केट में कटौती की है। और पीएम मोदी की अपील पर गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने भी सोने की खरीद में कमी का जिक्र करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय पीएम मोदी जी की अपील पर आपने जो राष्ट्रभक्ति दिखाई है वो गुजरात की असली पहचान है। पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में सोने की खरीद में भारी कमी आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या सीमित करने और अनावश्यक वाहनों के प्रयोग से बचने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के समस्त अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी अपने वाहनों में मितव्ययिता बरतें, काफिले में कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या को घटाने का फैसला लिया है। उनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री के काफिले में अब 13 के स्थान पर केवल 8 वाहन ही होंगे और उनके दौरे के दौरान कोई वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के आह्वान के संदर्भ में उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी मंत्रियों से भी अपनी यात्रा के दौरान कम से कम वाहनों के इस्तेमाल की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों से भी सादगी से कार्यभार ग्रहण करने की अपील की है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य राष्ट्रहित में सादगी को बढ़ावा देना और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने का आग्रह भी किया है। और सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है। आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने और सोने के आभूषण ना खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील का बड़े पैमाने पर समर्थन हो रहा है। झारखंड के गिरिडीह की स्थानीय महिलाओं ने पीएम की इस अपील का स्वागत किया है। आज इस वॉर के टाइम पे हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना है ताकि डॉलर पे प्रभाव कम पड़े। तो हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम अपने देश की इकोनॉमी की से रक्षा कर सकते हैं। आज मोदी जी के अपील पर हम सब एक बहुत ही बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम खाद्य पदार्थों का जितना हो सके उतना कम उपयोग करें, तो ये उनके लिए नहीं है बल्कि ये हम लोगों के लिए ही है। पहले स्कूटी से आती थी बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूँ, तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है एंड अच्छा है। तो सभी जगह से इसका स्वागत हो रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, भारत की अध्यक्षता में 14 और 15 मई 2026 को आयोजित होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला का नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक इस साल के अंत में होने वाले पूर्ण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों का एक प्रमुख हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात की। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। Secretary West, Shri C.B. George, to give us an update on the developments that will happen during the course of the 5-nation tour. For this briefing, he is being assisted by Srimati Pooja Kapoor, Additional Secretary, North Europe, Shri Piyush Srivastav, Additional Secretary, Europe West, and Shri Ashim Mahajan, Additional Secretary, Gulf. With that, I turn it over to Secretary West. Sir, the floor is yours. Thank you. Thank you, Randir. My colleagues, Additional Secretaries Pooja Kapoor, Piyush Srivastava and Asim Mahajan, my dear friends from the media, this visit is about 5 countries, so my opening remarks will be slightly longer. So we would be very happy to take questions after that. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will be undertaking a 5-nation tour
from 15 to 20 May, which includes the United Arab Emirates and 4 European nations, the Netherlands, Sweden, Norway, and Italy. Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. There are regular high-level exchanges between both the countries. You would recall that the UAE President paid an official visit to India on 19 January this year. The Crown Prince of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Khalid, was also visited India in February this year to participate in the AI Impact Summit. We share a comprehensive strategic partnership with the UAE, which has continued to deepen in all spheres of relationship. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and of course, people-to-people connect. As our MEA spokesperson said yesterday in his press briefing, discussions will be held on strengthening our bilateral cooperations. Discussions will also focus on strengthening our energy security. I repeat, energy security, which is an important aspect of our relationship. As you are aware, we have a community of over 4.5 million Indians in the UAE, which is a living bridge of our relationship. My colleague, Additional Secretary Gulf, Mr. Asim Mahajan, will further brief you on the visit to UAE. So let me now proceed with the other part of the visits. The visit to the 4 European countries comes in the backdrop of the India-EU FTA that we finalized earlier this year, and the India-EFTA TEPE, which was entered into in 2025. During the visit, the 3rd India-Nordic Summit will also take place. In our Amrit Kal journey, next 20 years, when we strive to become a Vikasit Bharat in 2047, India considers these countries as important partners in our Make in India initiative, aimed at transforming India into a manufacturing hub. These visits will focus on our 3 T's: trade and investment, technology, particularly green technology, innovation, startups, and of course, again, people-to-people connect. Let me now brief you on each of the visits to the European countries. On May 15 to 17, Prime Minister will be in Netherlands. This would be Prime Minister's 2nd visit to the Netherlands. Last one was in 2017. The visit comes at an important juncture in our bilateral ties. During the visit, Prime Minister will hold bilateral talks with the Prime Minister of Netherlands. He will also meet Their Majesties King Willem, Alexander, and Queen Maxima. Prime Minister is also expected to address the Indian community and meet top business leaders of the Netherlands. Our partnership has considerably deepened over the last few years across traditional sectors of trade, investment, and priority sectors of WA, that is, water, agriculture, and health, as well as people-to-people ties. In recent years, cooperation has further expanded into strategic areas of technology, innovation, defense, security, semiconductors, renewable energy, education, and the maritime domain. Further, people-to-people ties remain a key aspect of India-Netherlands bilateral relationship. The Netherlands is home to over 90,000 non-resident Indians and persons of Indian origin, alongside over 200,000 members of the Suriname Hindustani community. Around 3,500 Indian students are currently enrolled in various universities there. The forthcoming visit carries a rich and substantive agenda. It is expected to consolidate the new and strategic dimensions of the partnership that have emerged through the sustained efforts of both sides.
Now let me proceed to Sweden. On 17 May, Prime Minister Modi will undertake an official visit to Gothenburg, Sweden. This will be Prime Minister Modi's second visit to Sweden after his landmark visit in 2018 for the first ever India-Nordic Summit. The forthcoming visit reflects the growing depth of India-Sweden ties under the India-Sweden Innovation Partnership announced in 2018. Sweden today is one of the world's most innovative economies, and India and Sweden increasingly view each other as complementary innovation and technology partners. During the visit, Honorable Prime Minister will hold consultations with the Prime Minister of Sweden covering the full spectrum of bilateral relations, including trade and investment, green transition, AI and emerging technologies, resilient supply chains, defense cooperation, space collaboration, climate action, and people-to-people ties. Prime Minister will be the chief guest at the European Roundtable for Industry, a high-level pan-European CEOs forum representing business leaders from European Union, IFTA, and UK. Prime Minister and President of the European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, would also address the forum. The economic and commercial relationship between India and Sweden is on an upward trajectory, with bilateral trade reaching USD 7.75 billion in 2025 and presence of over 280 Swedish companies in India and over 75 Indian companies in Sweden. There is robust cooperation in climate action and sustainable industrial transition. India and Sweden jointly launched the Leadership Group for Industry Transition, LEADIT, the first multilateral initiative aimed to recarbonize hard-to-abate sectors at the UN Climate Action Summit in New York in 2019 in partnership with the World Economic Forum. The two prime ministers subsequently launched LEADIT 2.0 at COP28 in Dubai in 2023. During the AI Impact Summit in February this year, India and Sweden signed a statement of intent to establish the Sweden-India Technology and AI Corridor to strengthen cooperation in AI, emerging technologies, and innovation ecosystems. Defense cooperation has also emerged as an important pillar of the bilateral relationship. Swedish company Saab has established its Carl Gustaf manufacturing facility in Haryana, which is Saab's first such manufacturing facility outside Sweden and the first facility in India under the 100% FDI route in the defense sector. India and Sweden also enjoy long-standing cultural and academic linkages. Indian diaspora in Sweden, numbering over 90,000, serves as an important bridge between the two countries. Prime Minister's visit will impart fresh momentum to the India-Sweden partnership and open new avenues of cooperation across the three T's: trade, technology, and talent. Let me move on to Norway. On 18 May, Prime Minister will travel to Norway at the invitation of the Prime Minister of Norway on an official visit for bilateral engagement and the third India-Nordic Summit to be held on 19 May. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. On 18 May 2026, Prime Minister will hold talks with, on 18 May 2026, Prime Minister will hold talks with Prime Minister Stoll. It would provide an opportunity to shape and develop an ambitious agenda of cooperation in the areas of trade and investment, innovation, clean and green tech, blue economy, and cutting-edge advancements. Prime Minister would also have an audience with Their Majesties King Harald V and Queen Sonia. Prime Minister Modi, along with Prime Minister Stoll, will address the India-Norway Business and Research Summit, focusing on trade, technology, and investment to promote implementation of India-FTA Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. There are ongoing discussions on climate action, including cooperation in carbon capture and storage, offshore wind, battery technology, energy efficiency, etc.
India and Norway have been jointly undertaking several research expeditions and capacity building initiatives in the Arctic region. There is ongoing collaboration in the space sector as well. In 2026, ISRO installed its antennas at the KSAT's facility in Svalbard. The discussions of the between the prime ministers will shape the direction of a forward-looking India-Norway partnership. The third India-Nordic Summit will take place in Oslo on 19 May. Prime Minister Modi will be joined by the Prime Minister of Norway, Prime Minister of Denmark, Prime Minister of Finland, Prime Minister of Iceland, and Prime Minister of Sweden for the summit. Nordic countries are important partners of India in tech and innovation, sustainability, renewable energy, and digitization. The summit will be an opportunity to review the progress of India-Nordic relations since the second India-Nordic Summit held in Copenhagen in May 2022. India's relationship with Nordic countries has been on an upward trajectory since then, with deeper trade and investment linkages and growing sectoral cooperation in the areas where Nordic countries have great strengths. India's bilateral trade in goods and services with Nordic countries has reached US $19 billion, with exports at USD 9.5 billion and imports also at around USD 9.5 billion. Over 700 Nordic companies operate in India, and around 150 Indian companies have a presence in Nordic region. So there are very important milestones in our engagement with Nordic in the last few years. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region and provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. It will also impart a more strategic dimension to our relationship with the Nordics in tech and innovation. Prime Minister will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland, and Finland on the margins of the third India-Nordic Summit. Now let me move on to Italy. At the invitation of the Italian Prime Minister, Madam Meloni, Prime Minister Modi will pay an important official visit to Italy on 19-20 May on final leg of his tour to Europe. This would be Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. Prime Minister's program in Rome includes a call on the President of the Italian Republic and bilateral engagement with the Prime Minister of Italy. Prime Minister will also have an interaction with select Indian and Italian CEOs. In addition to the bilateral element, Prime Minister will also visit the headquarters of the Rome-based UN agency, Food and Agriculture Organization, FAO. India is a founding member of FAO since 1945. The visit to FAO underlines India's commitment to multilateralism, global efforts to address food security, sustainable agriculture, and rural development. The visit to Italy is taking place in the backdrop of growing momentum of India-Italy relations. The two prime ministers have met 7 times since 2023. Their regular dialogue has been instrumental in driving the upward trajectory of bilateral relationship. The visit will be an opportunity to review progress and identify new areas for collaboration under Joint Strategic Action Plan 2025-2029, a comprehensive roadmap for cooperation across various domains of bilateral cooperation adopted by both leaders in 2024. Economic and commercial cooperation is a key element of our partnership with Italy. Bilateral trade is currently to the tune of euro 40 billion. We had 3 business fora last year, which has further provided boost to our bilateral trade in sectors such as manufacturing, automotive, machinery, pharmaceuticals, chemicals, textiles, infrastructure, logistics, food processing, and renewable energy. Science and technology and innovation will be another area of focus of cooperation, which we will explore cooperation in emerging technologies, clean energy, joint research, and mobility of academic and researchers.
Our defense cooperation has also broadened with regular dialogues, service-to-service ties, and exchange of port visits. As you may be aware, the Italian defense minister had a fruitful visit to India last month. Both sides are also exploring avenues for defense industrial collaboration, co-development, co-production of defense equipment. Both sides will also discuss on enhancing maritime security cooperation. Both India and Italy strongly collaborate in security domain. The two prime ministers had announced joint initiative to counter financing of terrorism last year. We have a vibrant Indian diaspora in Italy, estimated around 2.5 lakhs. More than 6,000 Indian students are pursuing academic courses in various universities and institutes across Italy. Discussions will also further focus on expanding, enhancing this collaboration. Several key agreements and MOUs are expected to be signed during the visit, which will further strengthen the institutional framework and diversify areas of cooperation. Prime Minister's visit will further deepen the India-Italy strategic partnership, expand cooperation across a wide range of sectors, and enhance coordination on regional and global challenges. Let me conclude by saying this. Coming in the backdrop of the conclusion of the historic India-EU FTA earlier this year, as well as the signing of the India-EU Security and Defense Partnership, and a comprehensive framework of cooperation on mobility at the EU level, the visit of the Prime Minister will further reinforce India's ties with Europe in key sectors of trade, investment, innovation, defense, security, technology, green energy, and people-to-people ties. We will share more details as the visit progresses. I will stop here. We will be very happy to take questions. Thank you. Before that, Asim, would you like to add some elements of our energy partnership with UAE? I would request you, please. Thank you, Randhir. As all of you are aware, and already it has been briefed that the Honorable Prime Minister will be visiting UAE at the first part of his leg of the current visit. With UAE, we share a very vibrant partnership in the area of energy. The UAE is an important partner in our energy security. Last year, the UAE was the fourth largest source of crude oil, meeting nearly 11% of our requirement. In the area of LNG, Indian companies and the UAE Abu Dhabi National Oil Company ADNOC Gas have entered into long-term supply contracts for cumulative of 4.5 MMTPA LNG to India. Some of the recent contracts include between IOCL and GAIL signed agreements with ADNOC in February 2024 for 1.2 MMTPA and 0.5 MMTPA respectively. IOCL signed a third long-term contract for 1 MMTPA in September 2024, and HPCL signed a 10-year agreement with ADNOC Gas for 0.5 MMTA beginning in 2028 during the visit of His Highness President of UAE to India in January 2028. This makes India the biggest buyer of UAE's LNG. UAE is also the largest source of LPG for India, meeting nearly 40% of our requirement. UAE is also the second largest destination of petroleum, oil and lubricants export for Indian refiners. Indian companies have also invested over US dollars 1.2 billion in the upstream sector in the UAE. In 2018, a consortium of Indian companies, OVL, BPRL, IOCL, took up 10% stake in Lower Zakum block in the UAE. In 2019, Indian joint venture company Urja Bharat Private Limited, JV between BPRL and IOCL, has taken up stake in Abu Dhabi onshore block 1. In January 2026, BPRL has confirmed an oil discovery in Abu Dhabi's onshore block 1. These are the first of their kind upstream investments by India in the region. The UAE is also the first country to partner with India in the strategic petroleum reserves. In 2018,
ISPRL and Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, entered into an agreement for the UAE to store over 5 million barrels of crude oil in ISPRL's facility in Mangalore. India and UAE are also expanding cooperation in the area of renewable energy. An agreement has been signed between Masdar and the government of the state of Rajasthan in October 2024 for setting up of 60 gigawatts of renewable energy capacity. Besides this, both countries are also working on a feasibility study for electricity intergrid connection. UAE is also an active founding member of the Global Biofuels Alliance that was launched in September 2023 during India's presidency of the G20. So, as I have explained, we have a multifaceted partnership in the area of energy with UAE, and we continue to strengthen this further. Thank you. Thank you, Asim. With that, we open the floor for questions. We start with Siddhant. Hi, sir. I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, I have two questions. One regarding Prime Minister's visit to UAE. As Asim, sir, rightly pointed out, we already have deep cooperation with UAE. And since now UAE is out of OPEC Plus, it would be more feasible for us to be buying more energy from UAE. Talk to us a little bit about this, as this is Prime Minister's first visit after UAE coming out of OPEC. And second, sir, there is a lot being talked about the pipeline thing which is being planned. Is there going to be any significant announcement regarding that during Prime Minister's visit? And sir, second question to Secretary George, sir. Sir, as far as the ASML in Netherlands is concerned, in fact, there was this team from India which visited Netherlands, the ASML unit, and we have been trying best to bring them and be a part as far as Semiconductor 2.0 project is concerned. So is there going to be any announcement perhaps for a partnership with ASML for semiconductor projects going on in Gujarat? Thank you. Yeshi. This is Yeshi Seli from Business India. I have two questions. One is, has the conflict in West Asia impacted the supply of energy products to India? And if yes, are there any ships stuck in Hormuz where you've sourced the oil or the gas from UAE? And are there going to be any discussions on I2U2? Yeshi. So good evening, this is Ayush Agarwal from ANI. I have two questions. First on UAE, the energy aspect of the relationship. As Asim sir mentioned in his remarks, earlier this year, India announced a 10-year LNG supply agreement with UAE, which is beginning in 2028. During the Prime Minister's visit to UAE, will there be talks to further expand energy cooperation, including more LNG supplies, given the recent tensions in West Asia? And second question, sir, will there be any discussion on the IMEC corridor, both with the UAE president and also with his Italian counterpart? Thank you. Manish. Manish Chand, India Rights Network. Sir, what is the overall contribution of Nordic countries to our energy security calculus? And secondly, China is a major trading partner of all these Nordic countries. We trade in much, much larger volume than India. What are our competitive strengths, when we look at scaling up relations with Nordic countries? And related to that is that this summit is being held after a hiatus of 4 years. What will be the showpiece outcome here? Thank you. Neeraj. सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हम यहाँ सर, हमारा सवाल यह है कि 28 फरवरी के बाद जब से ईरान युद्ध की शुरुआत हुई, बहुत चुनिंदा देशों के राष्ट्र प्रमुख ने ही यूएई की यात्रा की है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी महज कुछ घंटे के लिए, हमें जो अब तक जानकारी मिली है। हमारा सवाल यह है कि क्या भारत द्विपक्षीय संबंधों के अलावा और एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा एक सिंबॉलिक मैसेज भी देना चाहता है? सऊदी अरब और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, यूएई और ईरान के रिश्ते को हम लोगों ने देखा किस तरह से तनावपूर्ण है, तो एक सिंबॉलिक मैसेज देने की भी कोशिश है भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के इस दौरे के द्वारा?
Sir, we can take these questions and then come back for more. Thank you, Rendir. Thank you very much. In fact, questions I would cover together. A few questions were related to the visit to UAE and also on the outcome of the visit. As I briefed in my opening remarks, we have a very concrete agenda covering the entire spectrum of bilateral relationship with each of the countries, with the UAE, with the Netherlands, with the Sweden and Norway, and of course the other members of the Nordic countries. We have a very concrete agenda which is included in the discussions and also engagement with the business community in these places. So as far as the particular outcome of the visit is concerned, we will continue to brief you as the visit progresses. Then the question again related to, as you said about UAE, the visit is coming after UAE came out of the OPEC on the pipelines. All this we will continue to brief after the discussions proceed. Again on ASML, with regard to the semiconductors, of course, this is an important, semiconductors is an important area of cooperation and collaboration with Netherlands, and we will continue to engage Netherlands at every level on this, and it is part of the discussions Honorable the delegation will have during the visit of the Honorable Prime Minister. Again, I would we would be briefing you after the visit on the whether the topics which would be covered, particularly with regard to the ITU2, IMEC, all these have been raised, but we'll continue to update you as and when the visit takes place. On the situation in the Hormuz, the ships, etc., I think we have regular briefings being given by our Joint Secretary, our spokesperson, along with other colleagues in the Ministry of Shipping and Petroleum. So I think that would be the best forum to answer the questions related to that. On the Nordic countries, their contribution, yes, it is happening after a few years, but again, energy is an important area of cooperation. But the most important element is that there is considerable complementarities. What are we looking for at this stage? As I mentioned, it is the 3 T's: trade and technology and talent, people to people connect. In each of these, trade and investment, green technology, innovation, these Nordic countries are doing very well. They're small economies, but total GDP would be 1.7 trillion USD, around 2 trillion USD is the GDP of these countries together. So it's an important partner for us, particularly when it comes to 3 T's for us. So there is huge complementarities, and we look forward to taking it forward. So 3 T's, technology, trade, and tourism. We look forward to working with these countries. Then I think I leave it at that. Azim, if you wanted to add something. Thank you, sir. On the question of energy, as I tried to highlight earlier, that UAE is a very important partner for us in the area of energy. I did mention that it is the 4th largest source of, it was the 4th largest source of crude oil last year, the 3rd largest source of LNG for India, and the largest source for LPG for India. During this visit also, we have various, energy partnership in the area of energy will be an important area of discussion. And we have various agreements which are also under discussion, but I would not like to prejudge their outcome. So as sir has mentioned, we will brief you post-visit. Thank you. We'll take some more questions. We'll go from there. Abhimanyu. Sir, I'm Abhimanyu Sharma from out here, sir. Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. I have 2 questions. Sir, firstly, any reason why the finance minister's Russia visit has been cancelled? And sir, secondly, the US Treasury Department
had given a waiver for a month for Russian oil. So has there been any conversation on any further extension? Will India stop the purchase of Russian oil? Huma first. So I'm Huma Siddiqui and I've got two questions. One, by when do you say here, sir? By when do you the India FTA is expected to be done, signed? And my second question is, we are already buying LPG from Norway. So would there be any kind of an agreement or an MOU signed to expand that buy from there? Sudhi. Thank you, sir. Sir, Shrudiranjan from Bloomberg. So on the UAE leg, so if you could give us an understanding whether there is any possibility of a long-term, not a gas contract, but, oil contract that we are looking at. And also on the security and the cooperation front, what kind of discussions are likely, sir? Madhu. सर मधुरेंद्र भाई न्यूज़ नेशन से यूएई के संदर्भ में डिसाइड यूएई के संदर्भ में आपने दो बातें कही, एक तो एनर्जी पर आपने जोर दिया और दूसरा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में। तो क्या भारत यूएई और इजराइल के बीच कोई ट्राइलेटरल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेकर भी बात होगी, क्योंकि I2E2 के संबंध में तो आपने कहा है ऑलरेडी, तो इस पर एक मेरा जोर है। दूसरा सवाल इटली विजिट को लेकर है। भारत और इटली के बीच आपने जैसा कि बताया कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और खासतौर पे डिफेंस टाइप के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बातचीत होने वाला है, तो क्या मुद्दे होंगे खासतौर पे, चूँकि नेवल भी दरअसल एरिया है, डोमेन है जिसमें बातचीत होने की बात आपने कही है। Akhilesh. Sir, I'm Akhilesh Suman from DD News. Nordic countries are supposedly very good in green technology, clean technology. So what type of cooperation are we going to announce in this visit? And also, sir, will there be a joint declaration in after the India-Nordic summit? Awad. Thank you, sir. The question is to Mr. Mahajan. Sir, they just wanted to know after the West Asian war currently happening there, is there any change in the Indian strategic thinking of increasing the reservoir of the petroleum from the Gulf countries, like offshore, onshore, to meet the Indian demands? Thank you. So we can take these questions. Thank you again. I think I would like to respond to the questions related to Russia or the Russian oil and other things. We have articulated our position on many occasions, and also, our spokesperson would be the right person to respond to such questions in his weekly press conferences. On the India-EU FTA, yes, that is a priority. We are working with European Union to have it agreed to at the earliest. So we will be, please keep tuned in for response. an immediate outcome coming up. On the energy cooperation with Norway, of course, that is a very important element. We would be discussing the energy engagement with Norway and also with other countries. I have seen your interview recently on related to the Norway, so I know where that question is coming from. On the long-term, gas agreement or related to UAE, I would leave it to, and also on the UAE energy strategic partnership, again, my colleague Asim will respond to those questions. India-Italy strategic partnership, yes, it's a very important partnership. As I have briefed, that defense cooperation constitutes an important element in that relationship. We would be having very, I would say, productive discussions on the defense and security collaboration with Italy in the forthcoming summit meetings, and we would definitely keep you informed about the progress on that front. India-Nordic, there would definitely be a joint declaration which would be released after the summit meeting, which would cover also the issue which you raised about
green technology. So please again remain tuned. We will keep you updated. Asi? Thank you, sir. As I mentioned earlier, and I reiterate it again, that energy is a very important pillar of our partnership with UAE. I have earlier listed out multiple long-term, contracts on LNG, which we have signed with them, and I have also mentioned that we continue to discuss with them in this important area of cooperation. There are agreements which are under discussion between both sides, and I would urge you to wait for our post-visit briefing, because these are under discussion, and as I said, that we would not like to prejudge the outcome. There was a question on the strategic petroleum reserves. I did mention that UAE was the first country to partner with India in the area of strategic petroleum reserve, and these discussions, of course, strategic petroleum reserves discussions continue. And I think there was a question on IMEC also. I can just supplement that question with this, that the India, Middle East, Europe economic corridor is an important project for both countries, and especially in the context of UAE. We had signed an intergovernmental framework agreement on IMEC in February 2024 under this initiative, and both sides are working on a virtual trade corridor, which is a Maitri interface. We have highlighted this on multiple other occasions also, how it will facilitate trade and improve the ease of doing business and other various other benefits of the virtual trade corridor. So that is what I have to add. Thank you, sir. Yes, defense and security are also important areas between both countries. You mentioned about, as I have mentioned, that we will of course continue our discussions in this area, but I would not like to, on the defense cooperation especially, it has emerged as a strong pillar of our comprehensive strategic partnership in the last few years. There are service level exchanges between army, navies and air forces which are active. The visit of His Highness the Crown Prince of Dubai and the Defense Minister in April 2025 was also an important visit in this context. And as you are aware, we had signed a letter of intent for the conclusion of a strategic defense partnership framework, which was signed during the UAE President's visit in January 2026. And both sides continue to work on the implementation of this vision, and discussions on defense cooperation, given its strategic importance, are a very likely feature of the meeting between the both leaders. My colleague, Additional Secretary, Europe West, Shri Piyush Srivastava will add a few points. Thank you, sir. Good evening, friends. I just wanted to add, there was a question on ASML and technology collaboration with Netherlands. Netherlands is very important partner as far as technology, especially semiconductor and digital domain is concerned. If you recall, we recently signed an MOU on semiconductor and critical emerging technologies with Netherlands. And there is also institutionalized collaboration between the institutes, top technology institutes from India, like IITs, along with the institutes in Netherlands, supported by industry. From our side, there are top industries like Tata and all, and from their side, NXP. And discussions are continuing with all the companies. In Netherlands, one important thing is that it is the largest investor from EU and fourth largest overall in India, with the volume of over $55 billion. And trade also, it's among the largest trade partners in EU, particularly for exports. Netherlands is third largest destination of Indian exports, and of course largest in EU. And last bit is on Italy, with respect to IMEC, as my colleague has already mentioned. This is an important corridor also in the present geopolitical context. And Italy is a very important partner in this regard.
as you may be knowing, very recently they held a meeting of stakeholders. I think some couple of months back. So this will also be an important area of discussion. Thank you. नीरज, आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि हमारे कोलीग ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो एक बहुत पुष्ट और घनी साझेदारी है, पिछले कई एक सालों में प्रधानमंत्री की 7 यात्रा हो चुकी है यूएई की, और वहाँ से उनके राष्ट्रपति की हमारे देश में 5 बार यात्रा हो चुकी है। इसके अलावे उनके यहाँ से उनके राज परिवार के कई एक लोग यहाँ आए हैं। तो आप उसे समझ सकते हैं किस प्रकार का ये साझेदारी है और इसको हम लोग कितना महत्व सिर्फ हम नहीं, दोनों देश एक दूसरे को देते हैं। ये जो इस बार की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, इससे इस मित्रता को, इस साझेदारी को और इसमें घनिष्ठता आएगी, और आप देखेंगे कि कई एक सारी अग्रीमेंट, MOUs इसके दरमियान किया जाएगा, जिसमें कि जैसा कि हमारे कॉलीग ने बताया, साथी ने बताया कि ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। Pooja, would you like to add some facts and figures about, since we are talking about trade and investment, all these countries are very important investment partners for India, and I would just like my colleague to talk a little about the kind of investment partnership we have with countries such as Norway, Sweden, etc. Pooja. Thank you, Randhir. Just to add to what Secretary West has already said, apart from foreign direct investment, of which we get substantial amounts from various European partners, another investment that we get from Norway, for instance, is from the government pension fund, which is about $28 billion. And we are looking to increase basically the investment that they have in Indian capital markets. Other than that, in all things green and blue, the Nordics are our partners of choice. So whether it's the green transition, green energy, green shipping, green hydrogen, green everything, and the blue economy, you will see a number of partnerships and interesting decisions coming out over the coming days, on which, as Secretary West, we will brief you in real time. Thank you. So was at any stage was a stopover in the Vatican planned, as reports had suggested, or is it may happen, may not happen? This visit is to Italy. To Italy. During the visit, a bilateral visit to Italy. I know. I know. During the visit to Italy, the capital. Okay. So that is where it is. No? Sir, this is Agni from ABP. High-level representative from UAE is supposed to reach Delhi by tomorrow, and Prime Minister is expected to meet all BRICS foreign ministers before his trip to UAE. Can you throw some light on that meeting, sir? So, BRICS, several leaders from across the world, some have already arrived, others will be arriving for the BRICS foreign ministers meeting. We have shared with you some of the details of the BRICS foreign ministers meeting. They will also be calling on jointly, calling on the Prime Minister, and we shall keep you updated with developments in regard to the BRICS FMM. Thank you. With that, ladies and gentlemen, please do follow us on these upcoming 5-nation tour of the Prime Minister. There is going to be a lot of substance, a lot of agreements, and many things that will add to our growth and development trajectory. So stay tuned. Thank you very much. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का, जिसमें प्रधानमंत्री के 5 देशों की विदेश यात्राओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।